Hello everyone. So I hope all of you are doing good and welcome to the first ever live session on Learno Hub 11-12, and today's live session, as we all know, is on class 11th maths trigonometric functions. And let me tell you at the beginning कि throughout this session I'll be using both English and Hindi because I know that I have children who understand Hindi better and I also have children who understand English better. So please do not worry, मैं दोनों languages use करूँगी, English और हिंदी, तो किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. So hello everybody, hello Alok, Bhaskar, Manav, Rohit Kumar. Hello everybody, Puneet Shukla. Okay, so are you all excited for the first live class? At least I am extremely excited about it because this is the first time that we did a lot of live sessions before, but this is the first time that we will be learning live. So let's see how it works. And इसी वजह से purposely what I thought was let us take this as a question solving session because sometime back I had already uploaded a crash course video on class 11th maths trigonometric functions both in Hindi as well as English. तो मैंने थोड़े दिनों पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो डाली थी जिसकी लिंक मैंने इस लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है. तो अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखी है तो आज का सेशन और ज्यादा यूजफुल होने वाला है बिकॉज देन यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट्स. फिर आपको कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पता है, राइट? So we will not waste a lot of time and we will straight away start with the NCERT unsolved exercises. तो trigonometric functions का जो ये lesson है, in this lesson of trigonometric functions you have 4 exercises 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. I am not considering the miscellaneous exercise for now as of today. तो हम क्या करेंगे, our agenda would be hi Tarun, hi Swagato, hi Chris, Hi Manav, Jain, hello everybody. So as I was telling कि हमारा एजेंडा ये रहेगा कि ये जो चारों एक्सरसाइजेस हैं, इन चारों एक्सरसाइजेस से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बिकॉज इफ आई डू दैट देन आपको खुद से सॉल्व करने के लिए कुछ बचेगा नहीं. एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया. जब तक आप खुद से थोड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको वो मैथ्स का वो जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो आपकी खुद से नहीं आएगी, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज हर एक्सरसाइज से मैं एक पैटर्न के क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगी लाइव क्लास में. एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट इज आफ्टर द लाइव क्लास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है दैट यू सॉल्व ऑन योर ओन. अगर आपको उसमें डाउट आता है देन यू कैन ऑलवेज आस्क अस अगेन एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू. ठीक है, so that's going to be our agenda and I think for a better experience it will be good if you can keep your NCERT textbook handy because जैसे जैसे मैं question solve करूंगी I will also keep telling you the exercise number and the question number for each question. ठीक है, also if you want keep a pen and paper handy so that you know चूंकि maths है so if I explain anything मैं कुछ भी समझाती हूँ, if you really want to quickly scribble it or do it, you're most welcome to do that. In fact, I would also say that if I am solving a particular question and if you think that you have already watched our previous videos and you will be able to solve it as well, then please solve it with me. Yeah, that will be fun. So are we all ready? So let me quickly see, are we ready or not? So okay. So I would expect all of you to give a thumbs up if you are ready so that we can go ahead and we can start our question solving session. Okay, hi Jatin, hi Amlesh, hi Galaxy of Technology, hi Ghosh Bhagwan, hi Alok Gupta. Okay, so I think we are all ready and let's get started. So, first of all, we will take the first exercise which is exercise 3.1. और इस एक्सरसाइज का जैसा कि मैंने बताया हर पैटर्न के क्वेश्चन हम लेंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव पिक्ड अप इज क्वेश्चन नंबर 1 जिसका सेकंड पार्ट बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल पार्ट्स. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वेयर वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट द डिग्रीज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स फ्रॉम डिग्री मेजर टू रेडियन मेजर और रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर, राइट? Okay, cool, everybody is ready it seems. So let's get started. So this is our first question
and we are given minus 47 degree 30 minutes. We have to convert it into radian measure. ठीक है, तो हमें रेडियन मेजर डिग्री मेजर का रिलेशन पता है, बट उस रिलेशन पे कूदने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ जो दिया हुआ है वो डिग्री में नहीं है, वो डिग्री और मिनट्स दोनों में है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. सो लेट अस फर्स्ट सॉर्ट दैट आउट, लेट अस फर्स्ट गेट दिस एंटायर थिंग इन degrees, right? And we already know that 60 minutes makes 1 degree. So therefore when we talk about 30 degrees, it's going to be 1 by 60 into 30, which is equal to half degree, right? Therefore we can say that minus 47 degree 30 minutes is basically minus 47 and a half degree, which is equal to minus 95 by 2 degree. So this is our degree measure which is given to us. ये हमें दिया हुआ है डिग्री में. तो अब हमारा कैलकुलेशन काफी सिंपल होने वाला है, बिकॉज नाउ वी नो द रिलेशन की रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई बाय 180 into degree measure. तो concepts मैं डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, because this is only about question solving. Those who want to take a look at the concept, you can take a look at the crash course videos that I have created by 5. So this will be 36 and we get minus 19 pi by 72. So this is going to be our radian measure. So this much radian. So we have converted degree to radian. Cool. Now let's move ahead with the next question, which is the question number 2 from exercise 3.1. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें जस्ट द अदर वे राउंड करना है. एज इन हमें दिया हुआ है रेडियन में, विच इज 5 पाई बाई 3, और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज में. Correct? So this is going to be even simpler because we will make use of the same formula. So we know that radian measure is equal to, बहुत से बच्चों को शायद लग रहा होगा ये तो बड़ा ही आसान है, तो हम धीरे धीरे आसान से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, सो दैट यू नो एवरीबडी हु हैज नॉट इवन स्टार्टेड सॉल्विंग दिस लेसन कैन आल्सो गेट एन आइडिया ऑन इट, ताकि सबको ऐसा ना लगे शुरुआत में ही काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, राइट? सो लेट अस डू इट दैट वे. तो रेडियन मेजर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एंड दैट इज 5 पाई बाई 3. सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर जो हमें निकालना है, राइट? तो फिर हमारा डिग्री मेजर कितना हो जाएगा? तो डिग्री मेजर हमारा हो जाएगा 5 पाई इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3 पाई. तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18, तो ये हो गया 300 डिग्रीज. तो ये हो गया हमारा डिग्रीज. ठीक है, तो रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? अब इसके बाद जो है आप बाकी के क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेंगे इस तरह के. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो फिर से इसी एक्सरसाइज का है 3.1 का, और हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 3 है. अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो रेडियंस, कितना रेडियन ये कवर करेगा 1 सेकेंड में? चलो उसकी बात तो हम बाद में करेंगे. फर्स्ट लेट अस सॉर्ट आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एज इन 1 मिनट इट इज मेकिंग 360 revolutions, राइट? बट हमें जो निकालना है वो कितने टाइम के लिए निकालना है? द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डील विद इज फॉर 1 सेकेंड, right? So we need to understand that how many revolutions are happening in 1 second. Correct? So see, reading and interpreting the question correctly is very important. Only then you will know what actually you need to find out, right? So we see that in 1 minute, we already know that 1 minute is basically 60 seconds, right? So that means in 60 seconds it makes 360 revolutions. So therefore if I talk about 1 second, so it makes 360 divided by 60 revolutions, which is actually 6. That means 1 second, 1 सेकेंड में ये 6 रेवोल्यूशंस लगाता है. ठीक है, तो अब हमें इतना तो पता चल गया भाई कितना रेवोल्यूशन लगाता है. अब हमें क्या पता है? 1 रेवोल्यूशन कितना डिग्री है? नॉट डिग्री, बेसिकली यहाँ पे हम रेडियंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं. तो उसकी जो 1 रेवोल्यूशन है उसमें टोटल कितना एंगल कवर होता है? एक कंप्लीट एंगल. वो रेडियन में कितना होता है? वो होता है 2 पाई. तो 1 रेवोल्यूशन में कवर होता है 2 पाई रेडियंस. तो अगर हम 6 रेवोल्यूशंस की बात करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई, यानी कि 12 पाई रेडियंस. तो हम कह सकते हैं कि 12 पाई रेडियंस इट टर्न्स इन 1 सेकेंड.
काफी आसान था, राइट? तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो मुश्किल नहीं है. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, और एकदम सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं ये. ठीक है, सो आई होप सो फार सो गुड. तो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि आलोक पांडे, आई थिंक यू सॉल्व्ड इट एंड इवन यू गॉट द सेम आंसर. गुड जॉब. जतिन सिंह भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड दैट्स ग्रेट. इनफैक्ट आई वुड एनकरेज यू आल्सो टू सॉल्व द क्वेश्चंस अलोंग विथ मी. तो मुझे भी थोड़ा मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा. या ओके ग्रेट. सो जगदीश तिवारी इज आस्किंग फॉर ICSC. वी विल डू दैट एज वेल. Okay, so chalo then Siddhartha Dyutimoy, let's move ahead with question number 4. So क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक्सरसाइज 3.1 का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है NCERT का. और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन टू सर्कल्स arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. तो यहाँ पे हम किन चीजों की बात कर रहे हैं? एक तो हम बात करें कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं, राइट, और हम रेडियस की बात कर रहे हैं. तो ये जो तीन क्वांटिटीज है, आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल, इनके बीच में क्या हमें कुछ रिलेशन के बारे में पता है? पता है, बिल्कुल पता है भाई. हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर थीटा जो होता है वो होता है L/R, यानी कि आर्क लेंथ बाई रेडियस. ये हमें पता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो सर्कल की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले सर्कल के लिए θ1 इज इक्वल टू L1/R1 और दूसरे सर्कल के लिए θ2 इज इक्वल टू L2/R2. ध्यान देना है, यहाँ हम दो डिफरेंट सर्कल्स की बात कर रहे हैं. बहुत बार बच्चे क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं, उन्हें लगता है एक ही सर्कल है तो रेडियस तो सेम होगा, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे हम दो अलग सर्कल की बात करें. तो सिचुएशन कुछ ऐसा है. अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? अगर वैल्यूज की बात करें तो क्वेश्चन बता रहा है कि जो दोनों का आर्क लेंथ है वो सेम है, यानी कि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं L, दोनों L की वैल्यू सेम है. ठीक है, तो अब अगर हम θ1/θ2 निकालें तो क्या आएगा? आएगा L/R1 डिवाइडेड बाय L/R2, यानी कि ये हो जाएगा R2/R1, क्योंकि L और L तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि R1/R2 हो जाएगा θ2/θ1. अब θ2 की वैल्यू दी हुई है 75 और θ1 की वैल्यू दी हुई है 60. ठीक है, तो 5 12 5 15, 3 4 12, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 5/4. तो यानी कि जो रेडियाई का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4. सिंपल. तो ये भी एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था. तो जैसे मैंने देखा शिबू नायक, सीताराम शर्मा, सिद्धार्था सबके आए हैं 5:4. करेक्ट. आलोक पांडे 4:5. तो बेसिकली आलोक, ये जो हमने θ1 और θ2 एज्यूम, यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है, राइट? तो R1/R2 इज 5:4. अब R2/R1 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 4:5, राइट? तो आई होप अभी तक वी आर ऑल गोइंग गुड. ठीक है, पूनम देवी कह रही है 5/12. पूनम, इस क्वेश्चन का आंसर तो 5/12 नहीं है, बट डू लेट मी नो आपको क्या कंफ्यूजन है, मतलब इफ इट इज क्लियर टू यू नाउ. अगर अभी भी कुछ डाउट है देन प्लीज यू फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. तो अब चूंकि मैं क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ तो हो सकता है कि आपका कमेंट तुरंत मिस हो जाए, बट आई विल ट्राई कि आफ्टर एवरी क्वेश्चन और आफ्टर एवरी 2-3 क्वेश्चंस आई विल kind of give you a shout out. Yeah, hi Kamalraj. Okay, hi Katyayani. So Katyayani, I think I am using English as well. So okay, if that is an issue, do remind me. But I am trying to use both English and Hindi so that it is convenient for all of you. Okay, so thank you for bringing that to notice. Okay, so now let us move ahead with the next question. So let me also tell you that with this, we will end exercise 3.1. So I solved 4 questions from exercise 3.1, and what I assume is rest of the questions you will definitely be able to solve on your own because they are like of the same format. So I have basically covered all the variety. That's what I can say. So let's move on with the next question, which is our question number 5, and in your textbook, that is NCERT textbook exercise 3.2, question number 5. Right, so it says find the values of other 5 trigonometric functions if tan x is equal to -5/12, x lies in the second quadrant.
So if you notice for this particular exercise, that is exercise 3.2, so here you just have two pattern of questions. So question number 1 to 5, they are all of the same pattern. So I'm just solving one for you, and baki ke jo char questions hai, that you can do it on your own. Yeah. So let's get started. So let us suppose we are given tan x. Now we have to find out sin x, cos x, cot x, cosec x, sec x. We have to find all the 5 trigonometric functions. Now if I ask you tan x is given, which is the other trigonometric functions that you can calculate the most easily if you know tan x? The simple answer is cot x, because cot x is equal to 1 by tan x. So this is the most simple one. So what will be cot x? So cot x becomes minus 12 by 5. So एक तो हमने निकाल ही लिया. Great. So now, okay, so just sorry to stop in between. Rajendra Prasad is saying, ma'am, I don't know basics of trigonometry. So I would advise you to go through the crash course video which we have released very recently. In fact, the link is there in the description. So you can take a look at that video. That will give you a very good idea on the basics. Okay, so cot x is there. Now what is the next thing that we can find out if we know tan x? Now we know this relationship that 1 plus tan square x is equal to sec square x, right? So tan is known to us, so we can very easily calculate sec square x. So sec square x will be equal to 1 plus minus 5 by 12 ka whole square, which will be 25 by 144. So this becomes 169 by 144. So what will be sec x? Sec x will be equal to root over 169 by 144, which is equal to plus minus 13 by 12. अब वी आर स्टक हियर, यहाँ हम फंस गए. कैसे? अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई sec x का वैल्यू प्लस 13 by 12 होगा या फिर माइनस 13 by 12 होगा? हाउ डू वी नो वेदर इट विल बी प्लस 13 by 12 और इट विल बी minus 13 by 12? So that is where this quadrant helps. So in the question it says that it is in the second quadrant. So let us apply our mantra. So we had learned this, right? Add sugar to coffee. So first quadrant, second quadrant. So second quadrant में सिर्फ sin theta positive होता है. So in the second quadrant only sin theta is positive. So if sin theta is positive, that also means that cosec theta will be positive, because 1 by sin theta is cosec theta. But right now we are dealing with sec theta. So that means sec theta will be negative. So sec x will be equal to minus 13 by 12. Correct? So that is sec x. So now that we know sec x, we can, so okay, so we also got the second trigonometric function. Now we know sec x, so cos x becomes very easy, because cos x is equal to 1 by sec x. So then it becomes minus 12 by 13. So cos x bhi nikal gaya. So now we are left with tan x. No, tan x is already given, right? So now we are left with sin x. So we know that tan x is equal to sin x by cos x, right? So from this we can say that sin x will be equal to tan x into cos x. So tan x is given as minus 5 by 12 and cos x is given as minus 12 by 13. Correct? So 12 will get cancelled. So sin x is equal to 5 by 13. So now that we got sin x, what will be cosec x? So cosec x will be equal to 1 by sin x, which is equal to 13 by 5. So you see, in this fashion we found out all the values for the different trigonometric functions. Clear? I hope it is. So Poonam Devi has shared her answer and it seems to be correct. Yeah. So it is correct. So great. So good to see that you are enthusiastic enough to solve the questions as well. So this is a good practice for you, and this is also quite encouraging and engaging for me. So not just Poonam, I also see others who have solved it, like Jatin, Alok Pandey. So they have also solved the question. Great. You're most welcome, Prakhar. So are we good so far? Right?
Okay, Gajendra Rajawat says, I want videos for class 11. So we are already releasing videos, Gajendra. We are already releasing crash course videos for maths class 11th, physics class 11th. In fact, chemistry is also coming very, very soon. So I do not want to tell the date because then you will be after my life, like which date and which video. But it's coming very soon. We have already started working on it. Okay, so I think Rajendra Prasad is again asking where I have to know the basics of trigonometry. So as I said, we have created some crash course videos. Their link are also given in the description section. So okay, I'll also try to give you the link in this chat box itself, so that you can click on that link and you can take a look. Okay, Katyayani is asking, ma'am, is this video for class 10? So today what we are doing, Katyayani, is class 11th maths trigonometric functions. Yes, and for class 10th, we have a separate channel, that is Learner Hub class 9, 10. So we will be doing live sessions there. Okay, Prakhar, you're following since 9. Great to know that. Okay, so let's move ahead then. Let's move ahead with question number 6. So question number 6 is again from NCERT exercise 3.2 and this is question number 8. So जैसा कि मैं बता रही थी कि in exercise 3.2 you have two types of questions, two variety of question. One I already discussed and this is the other variety, which is find the value of the trigonometric functions tan 19 pi by 3. Now many a times, looking at this value, no, like 19 pi by 3 or something very complicated, you will suddenly feel that, oh my god, how will I solve it? Right? But we'll make it simple for you. We'll see what are the things that we know about the function tan x. Because first we have to understand कि हमें आता क्या है, हमारे पास information क्या चीज की है, right? So that we know that okay, what modifications can we do to it. So now we have learned that there is a property of this function tan theta that it repeats its values after every interval of pi, which actually means that tan of, let's say, x plus pi is equal to tan x. That means after every pi interval, the value of tan x becomes the same. Right? This is something that we know. This is a property of tan theta. So what we will do, just to simplify the way we calculate it, what we will do is ये जो 19 by 3 pi है, so this is tan of 19 by 3 pi. So सारा problem 19 by 3 की वजह से है. Right? So let us see how can we break down this 19 by 3 pi in the form of say n pi plus theta. इस टाइप के फॉर्म में कैसे इसे तोड़ सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल. सो व्हाट वी विल डू, so we will do one very simple thing. So 19 by 3, let us convert it into mixed fraction like this. So 3 6 is 18. So we are left with 1 as remainder. So 19 by 3 is basically equal to 6 1 by 3. So we can write this as tan 6 1 by 3 pi. Correct? So this can further be written as tan of, now 6 1 by 3 इसका मतलब क्या होता है? What does it mean? It actually means 6 pi plus 1 by 3 pi. We can write it like this. Right? So just now I told that after every pi intervals, the value of tan theta gets repeated. So it is like, ये अब किस format में आ गया है? The format is tan of n pi, like after every pi, after 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, the value will get repeated. So tan of 6 pi plus pi by 3 is actually equal to tan pi by 3. And what is pi by 3? So pi by 3 is 60 degrees. So tan 60 degree is root 3. We all know that. So this is how we calculated the value of tan 19 pi by 3. Wasn't it simple? It was simple, right? In fact, Kishan, Somani, Jatin Singh, Shibun Nayak, they all have got the correct answer as well. Good job, guys. So, and this is the process that you need to follow, because why I told this in a very simple way, because a lot of children, they get stuck with these simple basic concepts. So it's important that you get your basics really strong so that, you are able to go ahead with more difficult problems. Okay, great. So I think we are also done with exercise 3.2, because I am pretty sure that now you will be able to solve all the questions of exercise 3.2. So what do you say, guys? Do you think that you will be able to solve all the questions of exercise 3.2? Do let me know in the comments. Okay, so let's move ahead with question number 7, and with that we start exercise 3.3. So when you look at this exercise 3.3, it's a lengthy exercise,
and I would say most of the children find this exercise as the most difficult one, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना पड़ता है. इनफैक्ट डू वॉच माई अदर वीडियो ऑन क्रैश कोर्स, देयर वी हैव ऑल्सो शेयर्ड सम मेमोरी टिप्स for that will be helpful for exercise 3.3. Now guys, please, I'm repeating again that I'll not be discussing more about the formula or more about the memory tips in this video, because I just want to focus on the problem solving, which is our agenda today. Okay, so are we ready to start exercise 3.3? Okay, great. So let's get started. Okay, Yagnesh Patel says, I am a student of class 12. Please help us. So I am there to help everybody. I'm not being partial to class 11. So I will be conducting sessions for you guys as well. So just give me some time. This is my first live and I just started with class 11, but I'll continue it for other classes as well. But what's important is, since this is our first ever live class, do not forget to share your feedback with us. If you think that this session was really helpful, only then we will, come up with more such live classes on different subjects, different classes. Yeah, great. Don't worry, Gajendra, we will do it for 11th as well. Okay, so this is question number 7, and in your NCERT textbook, exercise 3.3, question number 2. So you have to prove that cot square pi by 6 plus cosec 5 pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 is equal to 6. Now, this exercise is all about proving. So everywhere आपको एक ही चीज करना है, LHS is equal to RHS, right? So how do we start it? So we always start with the LHS. देखते हैं LHS में क्या है. So cot square pi by 6. Now pi by 6, cot pi by 6 की तो वैल्यू हमें पता ही है. So pi by 6 is basically 30 degree, right? So cot 30 degree is root 3. तो ये तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से ही पता है, जो हमने क्लास 10th में ही पढ़ रखा था, राइट? सो दिस इज रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस वी हैव कोसेक 5 पाई बाई 6. अब 5 पाई बाई 6 की वैल्यू हमें डायरेक्टली तो नहीं पता है sorry, but what we will do is we will again try to write it in that form of pi minus theta, pi plus theta. उस तरीके के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. So we see that very simply we can write it as cosec pi minus pi by 6, because pi minus pi by 6 is 5 pi by 6, plus tan pi by 6. Pi by 6 is 30 again, so tan 30 is 1 by root 3. So this is 3 into 1 by root 3 का whole square, right? So root 3 का whole square will be 3. And this is, now we also know that cosec pi minus theta, what is that? So जब भी हम pi minus theta वाली function की बात करते हैं, so the function remains the same, as in cosec pi minus theta is cosec theta, right? I think I should write it somewhere. So cosec of pi minus theta is cosec theta. The question is पॉजिटिव या नेगेटिव. तो ये कौन सी पाई माइनस थीटा हमारा आ जाएगा, पहला दूसरा क्वाड्रेंट पे, राइट? और दूसरा क्वाड्रेंट पे ऐड शुगर, दूसरे क्वाड्रेंट पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है. साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, राइट? तो यानी कि कोसेक पाई माइनस थीटा इज प्लस कोसेक थीटा. तो यहाँ पे भी कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा प्लस कोसेक पाई बाई 6 plus 3 into 1 by root 3 whole square. So 3 into 1 by 3. 3 cancel हो जाएगा. So 3 plus 1, that is 4, plus cosec pi by 6, cosec 30, which is equal to 2. So this is equal to 6. और हमारे right hand side पे भी 6 है. तो finally left hand side is equal to right hand side, and we proved it, right? So that was pretty simple, I guess. Okay, so now let's move ahead with question number 8. So in question number 8, again this is from the same exercise, that is 3.3. This is question number 5. So question number 5 for first part. So this question is find the value of sine 75 degree. Now we do not know the value of 75 degree directly from the trigonometry table as such, but can you think of something where you can break it in some way and then you can apply some formula? बाय नाउ हमें तो इस तरह के फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी या फिर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, आप जो भी कह लो उसे, ये हमें पता है. तो क्या हम 75 को दो ऐसे हिस्सों में बांट सकते हैं क्या जिनकी वैल्यूज हमें पता हो? जैसे हमें कौन सी वैल्यूज पता होती है, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये वैल्यूज हमें पता है. तो इनमें से किसी भी दो वैल्यू के कॉम्बिनेशन से हम 75 ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं. हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री.
और जैसे ही हम इसे इस तरह से लिखते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी, राइट। और साइन ए प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो अब साइन 45 डिग्री इज 1/√2, cos 30 डिग्री इज √3/2, cos 45 degree is 1/√2 and sin 30 degree is 1/2. So this becomes √3 plus 1 divided by 2√2. So that's the value of sin 75 degree. So I hope that's clear. So guys, are we good to go? चीजें समझ में आ रही है? Okay, so Rajendra Prasad says, ma'am, you can conduct live class of biology. Actually तो कर सकते हैं हम, बट वही मैं वेट करूंगी आप सभी के फीडबैक का ऑन आवर फर्स्ट लाइव क्लास। तो अगर आप सभी को लगता है कि लाइव क्लास इज रियली हेल्पिंग यू, सो वी विल कंडक्ट लाइव क्लासेस एंड वी विल कीप दिस एज एन एजेंडा कि लाइव क्लास विल ऑलवेज बी more about problem solving, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, we will look at questions or we will solve numericals, we will solve maths problems, so that's what we will do. Hi Jatin, good to hear from you, and also I see that you got the right answer. PG has also solved it, that's great. Jagdish Tiwari is again asking for ICSE, so trust me Jagdish, we really want to start ICSE as well, but give us some time. Okay. Okay, great. So are we ready to move ahead with our next question? I think yes, क्योंकि बहुत से बच्चों ने already question solve कर लिए हैं. Great. So let's look at question number 9. So question number 9 भी exercise 3.3 का है. So 3.3 से हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें बुक में भी तो भर भर के क्वेश्चंस हैं, isn't it? तो इसलिए मैं काफी सारे सॉल्व करके दूंगी इस उम्मीद पे कि यू विल बी एबल टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. या सो लेट्स लुक एट our question number 9, which is in your textbook exercise 3.3 question number 8. So we have to prove the following. Again, left hand side को right hand side के बराबर दिखाना है. So we just need to do that. So let us start with left hand side. So let's start with LHS. So what do we have? We have cos pi plus x. Now see, before doing anything, just observe what is there on left hand side. And what do you see? All the functions which are there, they are of this form. Either pi plus theta, pi minus theta, pi by 2 plus theta, cos of minus theta. And we have learned about all of these functions, right? So I think this is going to be a very simple question. What do you say? You will agree with me, right? So let's start. So cos of pi plus x. What will be the value? So whenever we deal with these kind of functions, pi plus theta, pi minus theta, so cos will remain cos, correct? But what will happen to the sign, whether it will be positive or negative? ये तो हमें क्वाड्रेंट ही बता सकता है भाई. add sugar to coffee, इसे मतलब भूलना ही नहीं है, ये तो हमेशा याद रहना है, राइट? तो अब पाई प्लस एक्स की हम बात कर रहे हैं. तो पाई प्लस एक्स हमारा कहाँ पे आ जाएगा? पाई से भी बड़ा है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो यानी कि cos थीटा नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x. ठीक है. cos ऑफ माइनस एक्स जब भी नेगेटिव एंगल की बात करते हैं हम कहाँ जाते हैं? क्लॉकवाइज. तो यहां से हम जाएंगे क्लॉकवाइज. तो बेसिकली हम आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे. फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो यानी कि cos ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा पॉजिटिव cos x. ठीक है, ये भी हो गया. डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स. पाई माइनस एक्स ये कहाँ पे आएगा? पाई से थोड़ा कम है, यानी कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट के आसपास बात कर रहे हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है पॉजिटिव, तो इसीलिए ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स. ठीक है. cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स. पाई बाय 2 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, राइट? तो यानी कि ये पहुंच गया फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और ये हो जाएगा cos थीटा नहीं होगा, ये होगा साइन थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 है. और जब भी साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा या साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है, तो क्या हो जाता है? उसका को फंक्शन आ जाता है, राइट? ये हमने पढ़ा था. ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स. यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे cos साइन में बदल जाएगा, राइट? तो ओवरऑल हमें क्या मिला? कुछ बड़ा ही सिंपल सा मिला है, राइट? ऊपर हो गया है माइनस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया है माइनस साइन स्क्वायर एक्स.
माइनस माइनस का कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, और यही तो है राइट हैंड साइड पे। बस छोटा सा प्रूफ था एक लाइन का, isn't it? So you see how important these functions are. ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई बाई टू प्लस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, बट आप मत करना, क्योंकि आपको हमने बताया है ऐड शुगर टू कॉफी। जब तक आपको ये याद है तब तक इस कॉन्सेप्ट में कोई भी गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो आर वी गुड टू गो? ओके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि आई एम अ फैन ऑफ योर टीचिंग, थैंक यू सो मच, सुपर वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू अगेन। ओके, आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट 5 years, वाओ दैट्स ग्रेट, so happy to hear from you. Okay, please continue doing what you are doing for underprivileged. I will continue doing what I am doing, do not worry about that. Okay, Art Rai says yes, live classes will be helpful for us. If it is helpful for you, I'll be more than happy to do it for you, but it's important that you let us know, you know, what's working for you and what's not working for you, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा, it becomes very difficult for us also to decide, you know, what to continue and what to discontinue, right? Okay, so Katyayani, you are from 9th class and you are still here and you are learning 11th maths, that's great, amazing. Okay, so I think we are all set to move ahead. तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें फिर से कुछ प्रूव ही करना है, मैंने बताया था 3.3 इज ऑल अबाउट प्रूविंग, बस प्रूव करते रहो, ठीक है। So prove the following: sin n plus 1x, sin n plus 2x plus cos n plus 1x, cos n plus 2x is equal to cos x। एक लंबा चौड़ा सा सब कुछ डाल दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो चलिए फिर लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ओके, so we also have few comments here. Okay, 1 second. So Tom Jerry says it's good classes 11 physics के chapter 2 की वीडियो बना दो। So exactly I will be making those videos as well. So we have just started, as I have told before also. So we will gradually come up with all new videos for the next chapters. So do not worry, we will complete your physics, your chemistry, mathematics, biology this year. We will complete the crash course for all the chapters. So you can be relaxed. Yeah? So welcome Kiran. And I hope you are enjoying the live class. Thank you, Arai. So, okay. So, now let's get started. So, let's see, even before we do anything, पहले ऑब्जर्व करना है कि मतलब हड़बड़ा के करें क्या। हमें तो बहुत सारे फॉर्मूले पता है साइन थीटा कॉस थीटा के, कौन सा वाला लगाएं, तो पहले ऑब्जर्व तो करें कि है क्या, क्या है ये साइन ऑफ एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मान लेते हैं, थीटा है ये हमारा, तो साइन ऑफ थीटा 1 बोल सकते हैं उसको। फिर यहाँ पे एक दूसरा एंगल है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये कुछ इस फॉर्म में है कि साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई। सॉरी, ये मेरा LHS है नहीं, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ कि LHS किस फॉर्म में है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो LHS कुछ इसी फॉर्म में है, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। मतलब अगर हम मान ले कि ये पूरा n+1x जो है ये कैपिटल X है, तो ये इसी फॉर्मेट में है। अब इस फॉर्मेट को देख करके क्या आपको कोई फॉर्मूला याद आता है? कौन से फॉर्मूला में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? साइन और कॉस के तो भाई हम 3 वैरायटी के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, और तीनों के मैंने तगड़े वाले मेमोरी टिप भी दिए थे। अभी तो मैं मेमोरी टिप डिस्कस करने वाली हूं नहीं, क्योंकि उसमें मेरा पूरा टाइम मेमोरी टिप में ही चला जाएगा। तो जिन्होंने वो मेमोरी टिप मिस किया है वो मेरी क्रैश कोर्स की वीडियो जरूर देखें, एंड दिस इज अ मेमोरी टिप दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय एंड यू विल आल्सो रिमेंबर ऑल द 3 वैरायटी ऑफ फॉर्मूले ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो फिलहाल आप बताइए मुझे कि साइन थीटा साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स माइनस वाई, यही तो होता है cos x माइनस वाई, या फिर cos a माइनस बी इज sin a sin b प्लस cos a cos b, राइट? तो यही होता है। तो अब हमारा LHS तो बड़ी ही आसानी से एकदम सिंप्लीफाई हो गया, देखने में लग रहा था इतना बड़ा था, बट ये तो एकदम चुटकियों में सॉल्व हो गया, राइट? तो करते हैं चुटकियों में सॉल्व। तो ये हो गया cos ऑफ x माइनस वाई। x क्या है?
एक्स एक्स नहीं है, गलती से एक्स मत लिख देना, फिर तो हो चुका सॉल्व। एक्स जो है ये कैपिटल एक्स बेसिकली क्या है, ये है n+1 इंटू स्मॉल एक्स, ये हमारा एक्स है, माइनस वाई क्या है, वाई है n+2 इंटू एक्स, ये है, ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, अब तो आसान सा है कुछ, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ठीक है। nx nx कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ प्लस एक्स माइनस 2x, ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा कि माइनस cos थीटा, माइनस यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, cos ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा cos x, और वही है हमारा राइट हैंड साइड, और हमने कर दिया इसे प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस खाली दिखते मुश्किल हैं, बट अगर हमें फॉर्मूला पता हो, और अगर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता हो कि लगाना कौन सा फॉर्मूला है, तो मतलब चीजें बहुत आसान है। तो एंड दिस इज अ वेरी जेनरिक टिप, whenever you are dealing with these kind of questions in trigonometry, I would say always spend 1 or 2 minutes to understand what is given here. For example, if you look at this question, in this question it looks very complicated, but only when you spend a minute to understand कि ये किस format में है, then only you understand कि it is in the format of a formula, right? So it became easy for you. So it's very important to understand the pattern of the question, and of course you should know the right formula, because अगर आप formula ही गलत लगा देंगे तो मतलब फिर तो बड़ी दिक्कत है, right? So okay, I think we are ready. Okay, so somebody has a huge question for me. So Sakshi Tripathi says, I have a huge question for you, ma'am. Are your videos of bio and physics sufficient for NEET? So exactly, Sakshi, if you know कि NEET के लिए जो आपकी बेसिक तैयारी है, that has to start from NCERT. So you must complete physics, chemistry, bio of NCERT thoroughly, and only then go ahead with more sample papers, practice questions, etc, etc. So the videos that we create, they are all based on NCERT. We try to cover NCERT to the max. So obviously if you are preparing for NEET, I think our videos act as the base, but I would not say that just watch my videos and you will crack NEET. No, that's not the case. Because even after watching the videos, you will have to solve sample papers, practice questions, and previous year's questions. So you will have to do all of that. But yes, NCERT is like the base book for NEET, and therefore our videos are also the same. Yeah. So I think I answered your question. Okay, great. Jagdish is saying, please start ICSE this month. Yeah, matlab, this month what all will I start? So you will have to understand, right? But yeah, I am planning to start a lot of live classes on different subjects classes, but let's see what all I can do, because I am also waiting for your response ki matlab, how are you liking our new crash course videos, how are you liking our live classes. Only when we know that, we will plan it accordingly. So Dashrath Singh says, please cover IIT course, JEE content. Jatin Singh is asking. So, but yeah, that's for sure that this time we are going to release NEET as well as JEE content on this channel. So that you can stay assured that JEE and NEET content are coming very, very soon. Yeah. So great. तो लेट्स मूव अहेड. अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं. अभी तो हम 3.3 पे ही है, 3.4 तक जाना है हमें. So this is our question number 11, which is in your textbook exercise 3.3 का question number 14. Question number 14, right? So we have to prove something. मैंने बताया था पहले कि इसमें सिर्फ प्रूव ही प्रूव करना है और कुछ करना नहीं है. So prove the following. Okay, you're most welcome, Sakshi. Happy to be able to help you. Okay, so prove the following. Sine 2x plus 2 sine 4x plus sine 6x is equal to 4 cos square x sine 4x. ठीक है. So as always we will start with the left hand side. तो अब left hand side में क्या दिया हुआ है, sine 2x, 2 sine 4x और sine 6x. ठीक है. तो how can you play around with whatever is given to you on left hand side? तो मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग सम रैंडम थॉट्स दैट माइट कम टू यू. कुछ रैंडम थॉट्स ऐसे आ सकते हैं कि साइन 2 थीटा का मुझे फॉर्मूला पता है जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये सभी जो है ना वो साइन 2 थीटा वाले फॉर्म में है, तो सब में फॉर्मूला लगा देते हैं. उससे क्या होगा,
उससे जो ये जो 3 टर्म का एक्सप्रेशन है ना, ये बढ़ के हो जाएगा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा सब जगह. बट will that help us to simplify? Not really. If you want, you can even try that out. आप ट्राई करके देख सकते हो अपनी नोटबुक में कि that it will make it even all the more complicated. So we always want to simplify things. तो इसमें हम और क्या लगा सकते हैं, ये इस फॉर्म में भी है, यहाँ पे हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि ये उस फॉर्म में भी है. जैसे साइन 2x प्लस साइन 6x, ये जो है ये उस फॉर्म में भी है, राइट. सो व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ दैट, राइट. सो लेट्स ट्राई. तो हम क्या करेंगे, साइन 2x प्लस साइन 6x इनको साथ में ले लेते हैं और 2 साइन 4x को अभी फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं. ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया साइन a प्लस साइन b. अब साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2, ये हो गया प्लस 2 साइन 4x. अब आप सोच रहे होंगे मैम आप तो बोल रहे थे सिंप्लीफाई करोगे, आपने भी तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा दिया. बट जो मैं फॉर्मूला मैंने लगाया है उससे मेरी चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं. पहले ये मेरे पास 2 अलग अलग टर्म्स थे, अब जो है ये एक ही टर्म है. अभी देखो सिंप्लीफाई करके ये कितना शॉर्ट हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बिकम 2 साइन 8x बाई 2, तो ये हो जाएगा 4x. ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2x माइनस 6x यानी कि माइनस 4x बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x. ठीक है, अब हमारे पास 2 टर्म है और उसमें भी लकीली दोनों टर्म में ये कॉमन भी है. फिर तो लग रहा है काम काफी आसान हो चुका है. बिल्कुल, तो कॉमन लेते हैं, जब कॉमन है तो 2 साइन 4x कॉमन हो गया, तो अंदर बच गया 1 प्लस कॉस 2x. ठीक है, ये वाला 1 बच गया इस साइड और इस साइड बच गया cos 2x, तो अंदर रह गया 1 प्लस cos 2 थीटा. अब अंदर वाले को कैसे, क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से तो सॉल्व कर नहीं पाए हैं, बट अब दिख रहा है हमें कि राइट हैंड साइड में sin 4x था, वो हमारा आ चुका है. 4 में से भी 2 आ चुका है. अब हमें और क्या चाहिए, 2 cos square x. तो किसी तरह अगर इसको 2 cos square x प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो गया. ठीक है, तो अब हम उसी में जुट जाएंगे कि कैसे इसे हम cos square x के फॉर्म में लिख सकें. तो देखते हैं, 2 साइन 4x ये हो गया. अब हम अप्लाई कर सकते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिलहाल हम cos स्क्वायर थीटा की ही खोज में है, राइट. तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट. अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो चाहिए था. तो अब क्या बन गया, ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x, और यही है हमारे राइट हैंड साइड पे, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, क्लियर हो गया. तो थोड़ा बहुत जो है ना हमें ये भी देखते रहना पड़ता है कि प्रूव करना क्या है. जैसे राइट हैंड साइड पे जो है ना उस पे भी हमें नजर मारते रहना पड़ेगा कि भाई अच्छा ठीक है, उसमें कॉस चाहिए, उसमें साइन चाहिए, उसमें कॉस स्क्वायर चाहिए. जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पे, यहाँ तक जब हम आ चुके थे तो हमें लग रहा था कि हाँ यार मतलब सिंप्लीफाई तो कर दिया है, अब फर्दर क्या करें. लेकिन जैसे ही इसे हमने देखा तो हमें लगा कि हमें एक कॉस स्क्वायर का टर्म चाहिए. कॉस स्क्वायर कैसे आ सकता है, कॉस 2 थीटा से आ सकता है, राइट. तो कॉस स्क्वायर आ गया, बट हमें साइन स्क्वायर तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अब साइन स्क्वायर का तो कोई टर्म है नहीं. तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर में बदल सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू विल हैव टू थिंक, कि मतलब यू शुड नो कि मुझे जब भी प्रूव करना हो ना तो बस टारगेट यही है कि हमें वो लेके आना है, जो राइट हैंड साइड पे है वो लेके आना है. अब उसको लेके आने के लिए क्या करना है, दैट वी विल हैव टू सी. ठीक है, समझ आ रहा है. ओके, सो नवीन, ओके अगेन I hope this question was not an issue, right? Because I was just solving the question. Okay, so what I was telling was, Naveen, this is especially for you, that
whenever you are solving questions where you have to prove LHS is equal to RHS, always keep seeing what is there on the RHS, so that your aim would be to make changes accordingly to get that desired result on the RHS. Like exactly that is what we did at this step, because when we got 1 plus cos 2 theta, we saw that what we need on right hand side is a cos square x. So how could we get a cos square from cos 2 theta? By applying the formula of cos 2 theta. Now, when we applied that, we also got a sine square theta, which we didn't want. So, therefore, we changed that 1 minus sine square theta to cos square theta, right? So, I'm just trying to tell you ki how do you approach these kind of questions, because we will be solving few questions. I'm sure after that, you will be able to solve all the questions of NCERT. But you need to be capable of solving any question of trigonometry, right? So, therefore, it is important that you think the right way. Clear? Okay, so Nishu Gupta is asking, ma'am, which subject teacher you are? I am all subject teacher, Nishu Gupta. So if you visit my channel, you will see me teaching biology, physics, chemistry, mathematics, English grammar, geography. So welcome to my channel. Okay, Shibun Nayak says, ma'am, conduct live classes every day. Every day to mushkil rahega. Every day is very difficult. So, but yeah, and I think every day is not required also, yeah, because you need time for your self-study. So, I will be there only when you need me. I will create a crash course so that you understand the concepts. Then I will do these kind of live classes so that you know how to approach problems. After that, you do it on your own. If you have doubts, you ask questions, I will answer them. Okay, so that will be our approach. So, Katyayani understands both English and Hindi, and that's awesome. Okay, so question number 12, which is again from NCERT exercise 3.3, question number 19. So you see, I'm trying to cover like a good number of questions. I think I'll cover almost 7 to 8 questions from this exercise, hoping that after this, you will be able to solve all the questions. Now, I also have a request to all of you that once this live is done, and if you are able to solve all the questions from NCERT, please leave us a comment. You know, that will be like super exciting for me. I'll feel that, okay, I conducted this live session for 1 hour, and after that, all the children could solve all the questions from NCERT, like the entire chapter was done. So that will be like a great feeling, right? So please do that. Once you solve all the questions, leave us a comment in the comment section of this video, so that I have all the comments in one video. Okay, so we do not have much time and I'll have to complete this. So let's move on to question number 12. Prove the following: sin x plus sin 3x divided by cos x plus cos 3x is equal to tan 2x. So again, as always, we will start with left hand side. So left hand side, now this is a pretty straightforward one. So if you look at the numerator, it is in the form of sin a plus sin b. If you look at the denominator, it is in the form of cos a plus cos b. So without wasting any time, we will simply apply the formula. So we know that sin x plus sin y is equal to, or sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. This divided by cos a plus cos b, which is equal to 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. Okay? So this is equal to 2 sin 2x. So I'm simply solving it. So nothing much to explain. This will be cos x divided by, because cos of minus x is again cos x. This will be 2 cos of 4x by 2, that is cos 2x, and this will again be cos of minus x, which is cos x. So 2 will get cancelled, cos x will get cancelled. So we are left with sin 2x by cos 2x, sin theta by cos theta is tan theta. So this is tan 2x, which is our right hand side, and hence we proved it. Simple tha, isn't it? It was pretty simple. Okay, let's move ahead with the next question, which is the last question of exercise 3.3. So this question says again, prove the following. वही हर जगह prove ही करना है बस. Tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus tan to the power 4x. So we have to prove this. So here also we will start with left hand side. And how can we play around with the left hand side? So just think about it. What are the formulae that you know that you can apply here? हमें tan 2 theta का formula पता है. We know what is tan 2 theta or tan 2x, right? So let's make use of that. So this can be written as tan 2
2x मतलब बेसिकली यहाँ पे जो जो हमारे फॉर्मूला में थीटा है दैट इज 2x हियर. And in this question, our whole agenda will just be to break down this tan 2 theta का formula. ठीक है, let's see how do we do this. So tan 2x is equal to 2 tan, I mean tan 2 theta or tan 2x, whatever you call it, it is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Right? Now, if you look at this, here again you have this tan 2x wala thing. So we will again break it down in the formula. Right? So this will become 2 into 2 tan x divided by 1 minus tan square x. This divided by 1 minus tan square 2x. So what is tan square 2x? That is basically tan 2x ka whole square, right? So this tan 2x also we will break down. So you understanding, we are just breaking down all the tan 2 theta. We do not want any tan 2x because if you look on at the right hand side, there is no tan 2x. Correct? So therefore, we will just break it down in the form of tan x. Right? So that's our agenda. So what we will do? So this tan 2x will also become 2 tan x divided by 1 minus tan square x. But this time is pure ka whole square. Right? So now, what do we do? So this becomes 4 tan x divided by 1 minus tan square x. I am just talking about the numerator. Now, if you look at the denominator, so denominator के जो entire denominator है उसके नीचे वाले term में क्या रहेगा? रहेगा 1 minus tan square x का whole square. Right? So let's do that. So if we write it down like this, so this becomes 1 minus tan square x ka whole square. So therefore here you will have 1 minus tan square x ka whole square minus 2 tan x ka whole square. Okay, so this is very simple maths. It is looking complicated, but actually it is just simple maths. So remaining I'll solve this side. So this becomes 4 tan x divided by 1 minus tan square x. Now this 1 minus tan square x का whole square ये ऊपर चला जाएगा and this will be down. So this will be 1 minus tan square x का whole square minus 4 tan square x. ठीक है? So this will get cancelled with one term of this. So what do we get? We get 4 tan x into 1 minus tan square x. So now you see we are almost reaching there. So if you look at the right hand side, so numerator we almost got it already. So only the denominator part is left. So in the denominator, this is in the form of a minus b whole square. So we can write it as a square plus b square minus 2ab minus 4 tan square x. ठीक है? So this becomes 4 tan x into 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x minus 2 tan square x minus 4 tan square x plus tan to the power 4x. What is this? This is our right hand side. देखा कितना complicated लग रहा था, but it wasn't complicated. But yes, in these kind of questions, there are always chances of calculation mistake. क्योंकि इसमें आपने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो मैं बड़े ही सावधानी से कर रही थी कि यहीं गलती हुई और अभी आप सभी बोलोगे कि मैम देयर इज अ मिस्टेक राइट. सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हेन यू आर डीलिंग विद क्वेश्चंस लाइक दिस वेयर यू हैव टू मेनी स्क्वायर्स, टू मेनी टू द पावर एक्सेट्रा. सो जस्ट बी केयरफुल. Okay, great. So let's move on now. Now we are not left with too many questions. However, we are running short of time, but I just want to complete this and I will complete this. So now we are moving ahead with the next chapter, not the next chapter, the next exercise, which is exercise 3.4. और यहाँ पर मैंने गलती से 3.3 लिखा हुआ है. This is exercise 3.4. So after solving so many questions on 3.3, I'm sure you'll be able to solve all the other questions. So Abhishek Kumar says, ma'am, please repeat the step. कौन सा step repeat करना था? Because I was doing it very slowly. But anyways, this video will be there. So if you want, you can always take a look. Yeah.
Okay, great. So let's look at question number 14. Again, in exercise 3.4, you just have two pattern of questions because this exercise is more about trigonometric identities. तो एक pattern के questions ऐसे हैं where you have to find out the principal and general solutions. Other pattern is where you need to find out the general solution. Yeah. So let's look at the first pattern. Find the principal and general solutions of the following equation. Sec x is equal to 2. ठीक है, let's do it. So sec x is equal to 2. If you quickly remember your trigonometric table which you have been learning from class 10th, तो 10th में ही हमने पढ़ लिया था, right? So when do you get this value 2? For sec 60 degree, that is sec pi by 3, क्योंकि sec theta का वो टेबल याद करोगे तो it is like 1 2 by root 3 root 2 2, so 2 is like 60 degree, that is pi by 3. So this tells you that x is equal to pi by 3, which is one of our principal solution, क्योंकि principal solution क्या होता है? Specific solution between 0 to 2 pi, right? Okay, Chris Evans, please stop asking the same question over and again. So chapter 4 की video जल्दी ही आएगी, but I do not know a date as of now. But you will be seeing more of physics and chemistry videos coming this week. But after that, you'll get maths ka chapter 4 videos. Yeah, great. Okay, so this x is pi by 3. Now we also know a property of sec theta, like because sec theta behaves the similar way as cos theta, right? And we know that cos theta जो है वो हर 2 pi interval पे अपनी value repeat करती है, right? So therefore we can also say that sec of 2 pi minus x जो होगी उसकी भी value same होगी, right? So what will be that 2 pi minus x? That will actually be 2 pi minus pi by 3, which is sec of 5 pi by 3. So 5 pi by 3 में भी sec theta की वही वैल्यू होगी जो sec pi by 3 में होगी, और ये दोनों ही वैल्यू जो है ये 2 pi से कम है. Since both of these values are less than 2 pi, so they both are principal solutions. So principal solutions क्या हो जाएगा? X is equal to pi by 3 and x is equal to 5 pi by 3. Now what about general solution? The general solution is pretty simple. We learned about 3 theorems, you remember? So if you remember the cos theta ka theorem, so sec theta will behave exactly the same way. So if ever you have that sec x is equal to sec y, so in this case we see that sec x is equal to sec y in this pattern. So what do we say? We say x is equal to 2n pi plus minus y, and y is pi by 3. So this becomes your general solution where n belongs to any integer. Cool, right? So general solution is always very simple. It is just that you should be aware of the 3 theorems which I have taught you. Again, for those who have not seen the crash course video, see that video. Only then you will feel that, you know, चीजें बिल्कुल आराम से solve हो रही हैं. And finally, we arrive at the last question of this session. Okay, and this is the last question of this session and also the last question from exercise 3.4. Question number 6. Find the general solution for each of the following. Each of the following तो मैं करने वाली हूँ नहीं, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी क्योंकि ये इस पैटर्न के आपके बुक में कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो एक मैं करूंगी, बाकी सारे आप खुद से कर लोगे. मैं थोड़ा मुश्किल वाला ही ले रही हूँ जहाँ पे आप फंस सकते हो. इनफैक्ट अगर आपने देखा हो whichever questions I solved, I tried taking the little complex ones or the tricky ones so that when you solve the rest you do not get stuck very often. Okay, so now you have this equation. So even before you try to find out the general solution, because in order to get the general solution you need it in that form कि cos x is equal to cos y, उस फॉर्म में लेके आना है इसको. तो उस फॉर्म में लाने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? सो हाउ डू वी सिंप्लीफाई इट? लेट्स सी. तो अगर हम गौर से देखें तो 3x और x, अगर इन दो, अब आप पूछोगे कि मैं यहाँ पे cos a cos प्लस cos b का फॉर्मूला लगाऊं या फिर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि 3 है. तो जब भी इस तरह के डाउट होती है ना, तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जो फॉर्मूला होता है ना उसमें क्या होता है, ऐसा होता है कुछ 2 cos x प्लस वाई बाई 2, राइट? इस टाइप की चीजें आती हैं. तो हमेशा ये देखो कि x प्लस वाई बाई 2 करने से जो जिस टर्म को आप अकेला छोड़ दे रहे हो वो टर्म आता है क्या? अगर आता है देन दैट इज द राइट चॉइस. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों पे फॉर्मूला लगाऊं तो x प्लस वाई बाई 2 अगर हम करेंगे तो 3x प्लस एक्स बाई 2 होगा, तो वो कितना हो जाएगा? वो 2x हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है. तो यानी कि वही लेना है. सो दैट्स लाइक अ ट्रिक टू थिंक कि कौन से दो टर्म्स हमें सिलेक्ट करने हैं, राइट?
तो चलिए सिलेक्ट करते हैं फिर cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 और माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा अपना। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अभी फिलहाल हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सो cos 2x if we take common, so we are left with 2 cos x minus 1 is equal to 0. So this tells us that one possibility is cos 2x is equal to 0, the other possibility is 2 cos x minus 1 is equal to 0. ठीक है, so if cos 2x is equal to 0, we know that when is the value of cos theta 0, 90 डिग्री पे होता है। In fact it is 0 for all 2n plus 1 pi by 2, ये वाली वैल्यूज पे 0 होती है, right? So we can say that x will be equal to 2n plus 1, sorry 2n plus 1 पाई बाई 4, क्योंकि 2x इज इक्वल टू ये होगा तो ये 2 इधर भी तो आएगा, तो ये हो जाएगा 2n plus 1 पाई बाई 4। तो ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा और यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब अगर cos की हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करें तो 1 बाई 2 कब होती है इसकी वैल्यू, so when cos pi by 3, so when is cos 1 by 2, cos pi by 3, right? So cos x is equal to cos pi by 3, so this is in that format, cos x is equal to cos y, and if cos x is equal to cos y, then we can say that x is equal to 2n pi plus minus pi by 3. So this becomes my general solution. Cool, right? So here also n belongs to integers. So that's it. So we are done. So I think with this I have been able to cover what I planned to cover today. So basically I thought that I will cover all all variety of questions from all the exercises of class 11th maths trigonometric functions, and I could successfully do that, though I am running 10 minutes late, but that's fine. This was our first live class. So I hope you enjoyed this class, and I'll be super duper excited and eagerly waiting to know your response on this video. In fact, I also want you not to join these live classes just for the sake of it. In fact, there's a purpose behind it, right? So as I said, I believe that once you go through these questions that I discussed in this live class, and you also go through the crash course video which I had created, whose link is given in the description, after that, trust me, you will be able to solve all the questions of NCERT textbooks yourself. If at all you have any questions, let's say if you have a doubt, you get stuck, what do? So you can always put your questions on the ask question section of examfear.com. So those who do not know, please go to examfear.com. You can go to ask question and you can post your question there. Now, and it's free. You do not need to register. You do not need to pay. Right? So it's free of cost. You can put your question there, but I have a sincere request that please do not write NCERT exercise 3.1 ka question number 8. That becomes very difficult for us to find out. So please type the entire question and put it there for us, and we assure you that we will reply to your question within 24 hours. Trust me. And once you are able to attempt all the questions from NCERT, do not forget to write that in the comment section of this live video. I hope to get a good response from all of you, and if I do get a good response, I'll come up with more such live classes. So I hope you enjoyed the evening. At least I enjoyed it a lot. So I wish to see you guys very soon with a new topic, another day on a live class. So till then, take care. Bye-bye. You're most welcome, Poonam, Kyadev, Chris. So Chris, whenever he asks question, you kind of bombard with questions. So next time live kab aayegi, I do not know. That depends on your response. So if I get a very good response, then we will plan a live very soon. Yeah, so I hope you liked it. So take care, stay home, stay safe, and also enjoy your stay at home. Take care. Bye bye.